call is now being recorded. The today's topic is pulmonary disease detection using artificial intelligence. Artificial intelligence, you all know about it. Talking about the pulmonary disease detection. So, pulmonary means related to chest. Those diseases that are related to lungs or the respiratory system. सांस की नली जिससे हम लोग सांस, that is only called as the respiratory system. So any infections or findings that are being found in the lungs, they are known as the pulmonary diseases. So one by one, we will go and study how they are being classified using images again. So these are the contents. Let me just give a demo before going into the details. As we were discussing yesterday, that nobody is interested in your code. You will find n number of codes on various platforms like GitHub. So what I am going to show is there is a exe file. The complete programming is done in Python. After double clicking on the exe file, a GUI based pop-up window will appear. It will authenticate the MAC address of the computer. Then after it will ask for OTP. The OTP for now is static, but the OTP comes on phone as well. So it is a secured platform developed at IIT Bhagalpur. And then after we are uploading the images, after uploading the X-ray images, we are getting the reports in PDF form and the reports on mobiles also. So mobiles are paid services, so it will not work now, but I will show in the presentation that how the message appears. It appears in Marathi language, it appears in Gujarati, it appears in Hindi, it appears in English. End-to-end programming is done in Python language. So to start the demo, as you can see, this is my application of 22 MB. After clicking on the double click, it checks for the MAC authentication. This software will only work when the internet is on. Otherwise, it won't run. After generating OTP, it will ask for OTP. For now, the OTP is static. Otherwise, if you are having the mobile paid services, मतलब अगर हमारे पास कोई paid service होता, तो mobile phone पे ये message आता था. And after putting the password or OTP that comes on your phone, this window appears. So there are only 3 buttons. The first button is upload chest X-ray. After clicking on the chest X-ray, you have to supply the data for it. Then you have to fill the different fields. All the fields has to be filled, like name of hospital, like A, patient name, B, age 25, address, New Delhi, phone number of the patient. This is a paid service, so for now it is not working. But when it was working, I have just taken the image and pasted on the PPT. So any number you can write, but you have to fill all the fields. The programming is as such that you have to fill all the fields. Gender, male or female,
email ID, anything you can write. After clicking on the get result, you will find the category of this chest X-ray. It will read the file name. As you can see, patient N3.jpg. It is normal and its COVID status was negative. Still, we have made the preference for the doctors that if they are not satisfied with the reports, because no AI is 100% efficient, and we don't want for the patient to get into any kind of problem in the cases of false positive and false negatives. So we have made a provision to enter the comment. Suppose the doctor or the expert or the radiologist is not satisfied, they can put any of the comment that RT-PCR or anything is recommended. After clicking on the submit button, a PDF is created in the same folder in a date-wise manner. Like you can see that the last examination report was taken on 16th and 17th November, and today is 22nd December. After clicking on the button, a date-wise folder is created. In that folder, a PDF file is saved with the name of patient. Two files are created, one for the hospital, one for the patient, in the same folder. So the moment I am clicking on the submit button, it will display a message. It will take a couple of minutes because my PC is somewhat slow. Report generated successfully. And in the same folder, you can see that a folder is created 22nd December 2022. After opening the folder, a PDF is created automatically. And all the details which we have filled on the software, it is just printed here. So it will automatically take the date and time, it will automatically take the report ID of the patient. It is random, it will not match with any of the patients. The details what we have put here are available here. Patient name B, age 25, gender male, specimen type chest X-ray, date of sample testing, COVID status negative, other respiratory diseases normal. Comments of the expert, RT-PCR recommended, checked and approved by. This can be duly signed by the official authority of the hospital, and it is automatically sent on the mail also. Till now I have made it off. But how it comes, you can see. It comes like this. Dear sir, madam, the report of the AI-based software is attached with this mail. Thank you. And this report is automatically sent on the email instantly. The only provision that has to be taken care of is the internet should be working. So now coming to the topic. सर हम लोग मोबाइल से कैप्चर किए हुए इमेज को ले सकते हैं। हाँ, सब कुछ। तो सर हम लोग एक्सरे का पता नहीं इमेज आता है, जैसे आप दिखा रहे हैं सर वो इमेज वैसा आएगा मोबाइल से? नहीं आएगा। नहीं, वो क्या कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ। आप जो पूछना चाह रहे हो वो मैं समझ गया। मोबाइल फोन से आप एक्सरे नहीं ले सकते, उसमें रेडियो वेव्स होता है, आपका फोन रेडियो वेव जनरेट नहीं करेगा। उसके लिए एक मतलब रूम होता है, डार्क रूम, जहां जाके आप एक्सरे लेते हैं, ठीक है।
but you have to take the X-ray. आप जो मशीन्स देख रहे हैं, द मशीन विच यू आर लुकिंग एट, दो टाइप का मशीन है, अभी तो मुझे याद नहीं, AR है और DR है, डिजिटल रेडियोग्राफी है और AR है। डिजिटल रेडियोग्राफी का रेजोल्यूशन काफी अच्छा है, साइज बहुत बड़ा है, हम उस पर आ रहे थे अभी मोटिवेशन पे। अब चूंकि आपने पहले पूछ लिया तो जान लीजिए, बहुत हैंडी, मतलब DSLR के साइज का एक्सरे मशीन आज के डेट में अवेलेबल है, और उससे आप किसी भी पेशेंट को किसी भी लाइट में, डार्क रूम की भी जरूरत नहीं, जस्ट यू कैन टेक दैट इमेज ऑफ द एक्सरे ऑफ द पेशेंट, बट यू कांट यूज द मोबाइल फोन। स्पेसिफिक आंसर टू योर क्वेश्चन इज यू कांट टेक द एक्सरे फ्रॉम द मोबाइल फोन। हमें इसकी सॉफ्ट कॉपी की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खुद AI बेस्ड इसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इस हिसाब से। ये सर विंडो बेस्ड या एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है? ये विंडोज बेस्ड, मैंने पहले बताया था आपको, इट इज एन exe बेस्ड सॉफ्टवेयर, .exe फाइल इज देयर, just you have to double click on it and the GUI based software will be open, the window will open up। कल मैंने आपको डेमो पाइथन का दिखाया था, वो मोबाइल फोन में आप इंस्टॉल कर सकते थे, जो प्लांट डिजीज वाला दिखा रहा था मैं आपको। Yesterday I have discussed about 3 parameters. What the consumer or the public requires are not the codes what you are either writing in MATLAB or Python or Java or C++, anything. That has to be come up with a layman language, I should say, जिसको कोई भी use कर सकता है. It should be that much easy, because people are only interested in clicking and typing on WhatsApp. So it should be that much flexible. So the 3 possible solutions are either you develop a software like Microsoft Office. It should have a exe file and the complete software should be installed. The second option is mobile phones. Means if you are having an Android phone, Android application can be developed. And the third one is web-based application, जिसको आप Chrome पे, और you can run it on Mozilla or any of the browsers. So yesterday what the demo what I have given for is for the Android application. Today it is for the Windows exe file. That can also run Linux platforms also. इसको आप Linux पे भी चला सकते हैं, but it is a exe file, दोनों पे चलेंगे। So अब इसको डेवलप कैसे करते हैं वो स्टेज बाय स्टेज देख लेते हैं। मोर ओवर कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में एक चीज कॉमन है, वी हैव अ डेटा, फिर डेटा से ही शुरू होगी बात, एंड वी हैव द सेम टाइप ऑफ डेटा विच इज इमेज। तो इमेज में ही जो कल मोटा मोटा आपको बताया गया था वही चीजें आज डिस्कस होंगी और उसी पे लैब होगा। First of all, the significance of the domain. Cardiovascular diseases are the leading cause of death in the world. Secondly, as per the report of World Health Organization, the mortality due to the lung diseases has increased up to 11% of the total number of deaths. और कोविड में ये सबसे ज्यादा देखा गया, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से लोगों की मौत। With 18% of the global population, India has disproportionately high 32% of the global deaths from the chronic respiratory diseases. In every 0.1 million of Indian population, an estimate of 142 cases declared as death having any type of lung disease. Chronic respiratory diseases like tuberculosis, ये अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है, इसका वैलिडेशन ICMR से बचा हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है टीबी हटाने का 2025 तक, इसका वैलिडेशन बचा हुआ है। अस्थमा, interstitial lung disease, pneumonia, there are many other types of lung diseases. As per a recent report of global burden of disease, a substantial number of acute and chronic respiratory diseases are prevalent in India. Among the CRDs, asthma and chronic obstructive pulmonary disease are the major reasons of morbidity and mortality across the several states in India. So these are a brief report regarding the different states
in India. As per ICMR, pulmonary fibrosis is found in 15% and COPD in 5% of males in India suffering from the respiratory diseases. In the past quarter century, COPD is now ranked as the second leading individual cause of this disease burden in India. In 2016, the prevalence of COPD and asthma in India was 4.2% and 2.9% respectively. Every year, a total number of 35 million chest X-rays are done in USA, and a radiologist has to study approximately 100 X-rays during the day, which is a tedious job. So from here, the motivation comes that there are many chances of manual error by reading the chest radiogram. Even different radiologists, what I have found out, for a particular X-ray, different radiologists have different opinions. किसी का ओपिनियन होता है कि चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, किसी का कुछ. The opinion varies in the case of chest X-rays. And secondly, if there is a burden of 100 chest X-rays, reading daily is a tedious job. Therefore, we require an expert system that must be capable of analyzing the chest X-ray and deliver the output, that is category, what kind of infection or a healthy person is. तो उसके लिए हम लोग एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं. तो चेस्ट डिजीजेस को पढ़ने के लिए काफी सारे टूल्स हैं. देयर आर सेवरल काइंड ऑफ टूल्स व्हिच आर चेस्ट रेडियोग्राफ्स, व्हाट वी कॉल एज एक्सरेज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन and MRIs. और भी tools हैं like PET. Both MRIs and CT scans can view internal body structures. However, a CT scan is faster and provides pictures of tissue, organs, and skeletal structure. An MRI is highly adept at capturing images that helps doctor to determine if there are abnormal or normal tissues within the body. Using radio waves and magnets, MRIs are used to view the objects inside the body. A constant magnetic field and radio frequency bounce off the fat and water molecules in your body. CT scans are considered as the inputs which provide more information regarding the body. However, its cost is also high. During the COVID, the cost of each CT scan was around Bhagalpur mein, it was around 10,000. However, in case of chest X-rays, AIMS Patna mein, its rate is around 100-150, and in Bhagalpur around maximum 1,000 rupees. So there is, you can consider as there is almost a price difference of 10 times between the chest X-rays and the CT scans. So if you want to deliver a low cost diagnosis, you have to go for the chest X-ray. I am not saying that any disease cannot be found out in the CT scans. I am talking about the cost for the common person, why they should adopt or go for chest X-rays. Chest X-rays produce images of your heart, lungs, blood vessels, airways, and bones of your chest and spine. It detects the abnormality in lungs, heart, aorta, bones of the chest. A chest X-ray can reveal many things inside your body, including the condition of your lungs, heart-related lung problems, the size and outline of your heart, blood vessels, calcium deposits, fractures, and post-operative changes. In this study, the chest X-ray are focused capable of detecting pneumonia, fluid in lungs, cyst infection, fractures, and heart enlargement. More particularly, these are the different kind of findings, or you can say the abnormalities in the chest, which we have considered or which I am going to describe
further. So in total, I think there are 14, 16, 16 different kind of infections. But again, as I have yesterday said, it is only a data for me. And to develop this concept or software, we need an expert opinion, as we have seen in the case of plant disease detection. We are engineers, so we don't know what is going on inside the chest. So these are the different findings found in the chest X-rays of different patients, and they are highlighted in bounding box, using bounding box. Actually, these are the features. As I am saying that yesterday we have discussed that these are the different findings that the doctor figure out, or these are the findings that are being highlighted by the doctors in the chest X-ray to say whether a patient is normal or is a case of pneumonia, cardiomyopathy, and many more. Motivation, the X-ray machines are having huge inside, जैसा मैं आपको बता रहा था, and which is restricted to ICUs in high-tech hospitals. There is no such a device. अभी ये कोविड के बाद आना शुरू हुआ है. So there is no such a device which is capable of detecting the or analyzing the chest X-rays in real time. So there is a need of to develop a low-cost and portable device integrated with the software for the automatic analysis of X-rays. A similar software is going to be developed for the plant disease detection also. So the images will be analyzed similarly. The method will be different, but the platform will be almost similar. So objective, so to detect the chest X-rays, the findings within the chest X-rays, we need to study and propose new efficient methods for feature extraction and classification. To develop and prototype this proposed method using commercially available embedded hardware platform. इसके लिए हम लोगों ने एक हैंडल डिवाइस भी बनाया, रास्पबेरी पाई माइक्रोकंट्रोलर, and we have filed the patent for both the software part and the hardware part. And finally, we can go for the fabrication of the small handheld device. So this is the complete block diagram of the proposed method, or how we are going to proceed to develop an efficient method for analyzing the different chest X-rays. So it consists of input X-ray images, the first part. So we have considered a database, NIH chest X-ray database, National Institute of Health, NIH. Chest X-ray database is available on, it is an open source database. It consists of approximately 1.25 lakhs of chest X-rays around. Then the device which we have implemented our proposed method is based on these four processes. First one is pre-processing, segmentation, feature extraction, and classification. All these blocks are being programmed using Python language and implemented on the Raspberry Pi microcontroller. And finally, the result is displayed. So we have integrated a 7-inch TFT. So its size, the size of the device is maximum this size. So 7-inch TFT is there where you can see the results. And similarly, how the software works, the hardware is also working. It is battery operated, and many more features are there. So we can implement using the MATLAB also. We can implement in any language. MATLAB is also a tool, Python is also a tool, or the language in which you are comfortable of. The prototype developed using different methods are validated using the NIH chest X-ray database, as I was saying, and a PCB-based handle devices. So what are the different applications that you can, if you are a being scholar or being a student, so what objectives you can have in this domain is
Three aspects are there. One, you can write the paper for the lung segmentation. It is also an open domain. Locating the abnormality inside the lungs. And third one, the detection of different diseases. So we have covered all the three in this presentation. These are the literature survey. A lot of people have reported lot of many works. On the left hand side, the name of the authors are there. Database, different kind of methods are proposed. DWT is discrete wavelet transform. And similarly, you will find that many methods along with different classes are being proposed, and all of them has reported a good accuracy above 90-92%. Now here from this slide, our work starts. So again, the same block is being proposed. One thing in AI you must remember that three blocks are common, and the steps increase or decrease depending on the type of data. Input will be there for any data. Either you are using a signal, either you are using any NLP kind of stuff, either you are taking a video for video processing or anything. There will be a block for data, simply data. Depending on the type of data, the methods will be used. Second stage, the pre-processing. Pre-processing is also common. You have to clean your data, you have to analyze your data, you have to see that if you are using the images, then you have to go for contrast enhancement or sharpening or smoothening the image. If you will, there are instances that the edges of the images are blur in nature, so you have to use filters for that. Then after feature extraction and classification. These four, and finally the result. 5 processes are fixed in AI, almost. If you want to classify any data for classification. So what we have done in this stage, we have taken a chest X-ray and we have taken out the lungs from that. Then after we have gone for training. First of all, we have categorized the training into normal and abnormal, and using the transfer learning approach, in the abnormality, we have again trained it for several diseases. And finally, we can look at the output. This part has been discussed earlier in the previous lecture, so I am just skipping it. Primary task of pre-processing is chest X-ray images is quality improvement. Technically, we say that we are trying to improve the signal to noise ratio. Means we are trying to reduce the noise. We are trying to highlight the different features of the image or the characteristics, whatever present is. The most commonly encountered different kind of noises in chest X-rays are salt and pepper, speckle, Gaussian and Poisson noises. For the database, what we have, after studying the literature, you will find out that there are several kinds of noise that are being associated, and proper solutions are also available to these kind of noises. Taking into account the median filter was used, you have to implement this filter today. Variables are being measured, and we have standardized the data by reducing the zero mean and using the variance. And this is the Python code for the mean and median filter. आप लोग इसको अभी करोगे या बाद में करोगे? चलिए बाद में कर लेंगे. Next is the contrast. 10 experiments इसमें दिए. छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा 5-7 लाइन से ज्यादा नहीं देखना. So the second method is that we have, this comes under pre-processing the image. Contrast limited histogram equalizer.
I was talking about the histogram yesterday, so I will not go in detail, much detail, but I have written the different processes that in images there are different kind of attributes or features that has to be highlighted, among which contrast is there, among which you have to go and check the histogram of the images. So after getting through, the results are like this, that A part in both are the original images. B is the result of BCEC enhancement. And last one is the result of the contrast limited adaptive histogram equalizer. And this is the Python code for clash enhancement. Now coming to the chest segmentation. Here our objective is, yesterday I was talking about the plant leaf disease detection. So again, when you are taking in any image of the plant, the similar problem you are going to face with any of the images. If your input is an image, like while you are taking an image, there may be a possibility that your leaf will be like this, and these parts are not required for processing. So this is my region of interest, for which first of all I am going to take the leaf out of this complete image, and then after we are going to process it. Process it means then after we will only go for feature extraction and classification. तो सेगमेंटेशन के भी कोड्स हैं, वो भी आपको देखना है कि एक्सरे में लंग्स को कैसे हाईलाइट करते हैं, वो भी 4 लाइन का कोड है, वो आप चला के देख लीजिएगा. So these are the results. We have pre-processed it using the O2 segmentation. We have highlighted, and finally the lungs are being highlighted in the chest X-ray. And we are just taking both the lungs out of the image, so that we can accurately find out that the findings of any disease is lying in which lung, left lung or right lung. Both can be identified. These are more on the results of chest segmentation followed by the convolutional neural networks. So it does both the feature extraction and the classification part, as I have discussed earlier. कितना टाइम बचा है मेरे पास? 12:30 तो पता है, लैब भी तो करेंगे ना यार, वो तो मैं भी देख रहा हूँ. So let me go for some data architecture. So this is the basic architecture of CNN. It does both the feature extraction and the classification part. Both. There are several other methods for feature extraction and classification. Just I am writing them. चूंकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने लिखा नहीं. कल मैं बता रहा था, I was studying regarding the ANN, SDM, random forest, CNN. In CNN, autoencoders are there. These are the number of machine learning or deep learning classifiers. You can use any of them. Their internal parameters are chosen manually. There are two methods. One is known as hit and trial, which is done manually. And second one, you can go for the optimization methods like genetic algorithms, PSO, bacterial foraging, any of them. So the internal parameters are chosen using the optimization methods also. It will take some time to choose the optimal parameters for the classifier for which we are training. In the feature extraction, there are many methods. You can go for FFT. You can also go for the time domain features. You can also go for many methods are there. Distance between pixels.
in the time domain, and there are many transforms, many number of transforms. FFT, just remember we are dealing with a two-dimensional signal, which is image. FFT is available in both one-dimensional also, two-dimensional also. So its aim is to take out the frequency features from the image. The output, its output is frequency. So in convolutional neural network, there is a convolutional layer followed by the pooling layer and fully connected layers. The major part is up to this part, the feature extraction is being done in layer by layer manner. But if I would ask that what are these features that are being captured using the CNN, can somebody tell me? आप लोगों ने CNN के बारे में पढ़ा ही होगा. वो क्या फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है लेयर बाय लेयर, क्या होता है? ये एक ब्लैक बॉक्स है, वो क्या कर रहा है अंदर किसी को नहीं पता. We don't know. Like in case of machine learning, how it is mapping to the output class, nobody knows. There is a mathematics, no doubt, but how it actually trains itself, there is a mathematics behind it. But in what manner it is going to give the output is a complete blank. It is only what you are doing is you are manually selecting the parameters in the feature extraction stage, that you have to select the number of filters like 3 cross 3, 5 cross 5. It varies. So you have to go for this. इसके parameters मैं आपको दिखा दूँ. There are different architectures in case of CNN. Yeah. These 4 to 5 points have to be for performing the CNN operations. These has to be selected by the designer itself. You have to choose the optimizer, you have to choose the number of epochs. You can go for 500, 1000, 5000. Batch size, learning rate, and the activation function. The point is, first of all, there are many number of architectures, that is more than 10 in case of CNN. There is no fixed algorithm that can be said that it is work as efficient on a particular data set, that you have to check. Depending on the type of data, the performance is going to change. But there are 3 to 4 fixed rules to achieve higher accuracy. The first condition is that the number of training data in the training set must be more. जितना ज़्यादा होगा उतना performance अच्छा होगा ऐसा नहीं है. It has to followed by a second condition. There must be variance in the data set. Means it should not be like similar kind of data must be replicated in the training set. So what will happen if same type of data is available there, then it will be unable to learn the features, as we have seen in the case of plant leaf also. The database which we have is on a fixed plane. So there is no problem, there is only one leaf. You will take out the leaf, you will extract the features, but when you are taking the pictures using your camera, then you will find that you have to go for the leaf segmentation part. So there is a difference between the implementation that you are doing on the online data sets, and that will be having the same performance on a real-time data. It is almost not possible. So you have to consider, what do I mean by saying variance is, there must be different amount of data
and different type of data, whatever its possibility is, it has to be in the training set. So first is you have to use or go for more amount of data. There must be variance in the training data set. So it will definitely improve your accuracy or the performance of the AI model which you are going to develop. Secondly, the parameters. Nobody knows. Maybe somebody is using SVM, CNN plus SVM. Means after this part, after the fully connected layer, I will replace the block by SVM algorithm. So feature extraction will be done by CNN. Classification will be done using SVM. Support vector machines. It is another kind of method. So all the classifier will have some internal parameters as we are seeing in the case of CNN. There are more number of parameters. You have to choose the kernel side while designing the architecture also. So that you must take care that you must use the optimization technique. However, its limitation is it will increase your training time. ट्रेनिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, मतलब आपका मॉडल डेवलप होने में बहुत समय लगेगा, because depending on the data it will fit with the classifier and then accordingly the optimal parameters will be selected for your classifier. The data, and the third thing which nowadays nobody is focusing on is the pre-processing stage. During the COVID period, many number of papers have been published in reputed journals. They have published different kind of CNN architectures there, and they have not done the pre-processing part. These pre-trained models are available on GitHub. You can download it. You can give your chest X-ray or any. All the results are failed. None of the results are good. None of the models reported the 90. If they are claiming 90% accuracy in their papers, that is not the case in the real data set, practical data set. This works only for a particular data set. And the final thing that is fixed, fourth one, is this one, cross-validation. Cross-validation is an important step while training your machine learning or deep learning algorithm. It is called as k-fold cross-validation. ये आपको करना ही चाहिए. ये चारों चीज आप नहीं करेंगे, you cannot expect that your AI model must be robust. कि वो practical data set पे अच्छा perform करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं. इसका क्या relevance है? The relevance of k-fold cross-validation is to avoid the biasing of the classifier. कई बार क्या होता है? We were talking yesterday about the imbalanced data set. If we are having three categories, say A, B, and C. In category A, we have 15,000 of samples. In B, we have 2,000 or say 3,000. And in C, we have 1,000. So this is 5 times. This is 15 times. This is definitely going to bias the classifier. Definitely. And what I have seen that if you are not doing two techniques, the first one is this, and the second one is data augmentation. I am coming to data augmentation in a couple of minutes. So what it will result is, if you are giving any input, suppose A, it will always or 90% it will report to C. The data set, the number of samples which is the least will bias the complete classifier. So if your input is either A or B, it will always come as C.
So to avoid this biasing, डाटा सेट में ए ज्यादा है तो उसको आउटकम ये ज्यादा देना चाहिए लेकिन देता नहीं, इसीलिए ये ज्यादा देना चाहिए ऐसा कहीं लिखा हुआ थोड़ी हो। तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग आर टू डिफरेंट फेजेस. As I was yesterday giving an example, like you study for a complete semester and how much trained you are, that can be only expected from the results of the semester. In training phase, these are the number of samples. It is not, there may be a case that while testing, we have achieved 99% of accuracy using 100 samples in each of these. But we have to see the training accuracy. But what happens is, when this complete data trains on 18,000 samples, this overfits the classifier, having the least number of samples. So जब भी आप, whenever you are giving any other category of data other than the least one, it will always overfit your results, or your results will be false. Overfit the model or the result will be false. So to avoid this, आप सोच रहे हैं कि 15,000 से टेस्ट किए तो 15,000 वाला ही भारी पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं. भारी कोई भी पढ़ सकता है. मैं एक अपना पर्सनल आपको जो मैंने देखा है, व्हाट आई हैव सीन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, कि जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सैंपल्स है, अगर वो थोड़ा बहुत भी अच्छे से ट्रेन हो गया तो ये वाला जो है इन दोनों पे भारी पड़ जाता है. ज्यादातर का रिजल्ट आपको सी देगा. ये मेरा पर्सनल, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द चेस्ट एक्सरे डेटा सेट. मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुनिया के सारे डेटा सेट से. आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर डेटा. आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स, नॉट ऑन द सैंपल्स. बट theoretically, there is a biasing of the classifier. We call it biasing. And to avoid this, this is the method, k-fold cross validation. In this, you have to choose the size, choose the value of k, and based on k, it will make the number of folds. Like, if we are having 1 lakh of chest x-rays, and suppose the value of k is 10, so it will divide this complete into 10 folds. So each fold, for each fold, it will have 10,000 number of chest x-rays. So this, how this performs, suppose we have 10 folds, so F1, F2 to F10. For each fold considered for testing, the remaining 9 will be considered for training. And it will vary. Means first time suppose F1 is being tested, second time this F2 will be only tested, third time the F3 will be tested, and the remaining 9 will be considered for training. So what will happen? For each fold we will get the training accuracy, testing accuracy. हर fold पे एक accuracy आएगी, and the final accuracy is considered by taking the average of all the accuracy. This avoids the biasing. वो divide कर देता है. Secondly, there is a class imbalance problem in the machine learning models. So there are two standard methods. The first one is SMOT. This is an oversampling technique which I have discussed in my previous lecture. उसका PPT भी आप लोगों के पास है. Today I am going to discuss about the data augmentation. In the data augmentation, we try to balance the different samples in the different categories of data set using the data augmentation method, so that this overfitting condition should not come over. So it is preferable to go for both data augmentation if your different samples of data are not equal or near to equal in all the categories that you have considered. तो ये 4-5 तरीके हैं, ये तो जरूर आपको करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एक प्रैक्टिकल वो बनाए.
तो 90% ये कोरोना वाले काम में आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि CNN का डिफरेंट आर्किटेक्चर उठाया, पाइथन कोड उठाया, डेटा सेट पे लगाया, एक्यूरेसी आया और पेपर आया, बस ये है। So this was initially we have considered 10,000 number of chest X-rays. However, the demo is presented on nearly 1,75,000 of chest X-rays, and that has been trained on a supercomputer. So आपके system there may be a possibility that your system may hang after taking a sample of around. If you will go beyond 20,000 of chest X-rays, then your computer will definitely hang if you are using 8 GB RAM. So I am talking about that we have taken the access of supercomputer from CDAC Patna, and there we have trained over 1,50,000 of chest X-rays. These are the results. We have calculated the probabilities of COVID cases, probabilities of COVID cases using different models of the CNN architecture. These are the RC curve in which you can see, yesterday this graph was explained like it is between the precision and recall, and this accuracy is almost, you can see that for the RaceNet 18 it is 98.9, RaceNet 50 it is 9. So these are the different architectures in the CNN. We have implemented all. Then after we have prepared the confusion matrix. This was also explained yesterday, like this, if the category 0 is normal, suppose this category 1 is pneumonia, suppose this second 2 is any COVID or TB. So the rows replicates the ground truth, the column replicates the AI tool, the result from the AI tool. So its meaning is that out of 80 number of normal samples categorized as 0, 75 are correctly classified as normal, and 5 are misclassified into pneumonia. And similarly, this holds for both the rows. Based on this, we calculated the sensitivity and specificity of the software. These are the results validated at AIIMS Patna and RML New Delhi. There is almost above 90% accuracy we have achieved. Then the end-to-end GUI-based platform has been developed in Python language. So a GUI-based platform is developed. The GUI opens with an OTP. End-to-end developed in Python. The proposed software is focused to work on general purpose computer. ये किसी भी सिस्टम का हम लोगों ने गुजरात वगैरह में इसका ट्रायल करके देखा हुआ था, उसका सर्टिफिकेट भी है हमारा. So it should meet the infrastructure already available in the hospitals. भागलपुर मेडिकल कॉलेज में भी देखा है, गुजरात में भी देखा है, महसाना में 4-5 जगह ये वैसे ट्रायल पे चला के देखा जा चुका है. The proposed software is efficient in terms of accuracy and computational complexity. Computational complexity means the number of operations that is being done. Suppose you are implementing 1,000 lines of code and your results come after 1 hour or 2 hours. Like in RT-PCR, the result, however it is a biological test, we should not compare the AI tool with a biological test. But still, the results of RT-PCR comes for a duration between 4 to 6 hours. उसका रिजल्ट आने में 4 से 6 घंटे लगते हैं. अब आपने ऐसा कोई मैथमेटिकल एल्गोरिथम बना दिया है जो 12 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद अगर रिजल्ट देता है तो उसका कोई मतलब नहीं. The people are not going for your tool to wait for the result. So that must be, the results must be available in real time. So that is what computational complexity is. It highlights the number of operations in a particular method. How many number of operations are there and what is the execution time of the software. The software is secured. It verifies the MAC authentication address of the computer. If the internet is not on, it will not work. Generates the report.
It means we have also tested it for mass screening and can be customized as per the user requirements. This is the message. We have used a trial. There is a trial website, Twilio, and the message you can see that हिंदी में है. हम लोगों ने गुजराती, इंग्लिश, मराठी वगैरह सब वो करके देखा. तो आप किसी भी तरीके से पाइथन कोड से किसी भी लैंग्वेज में लिख. These are the reports. This is the device that we have developed. It is a handheld device, battery operated. It works using your power bank. आपको सिर्फ उसका यूएसबी कनेक्ट करना है, जैसे आप मोबाइल फोन को करते हैं, और आपको इसको कहीं भी, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो भी ये काम करेगा. इफ जैसे रिमोट एरियाज में जहाँ कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में नहीं है, लेकिन चेस्ट एक्सरे गांव-गांव में हर जगह हो जाता है. So we have made a provision for that also, and these are the reports for the mass screening. We have tested for 1,000 patients, and the execution time was around 2 minutes for 1,000 patients. 5 minutes approximately. 5 minutes for 1,000 patients. We have categorized all the reports. These are the comparison of existing tests approved by ICMR, the RT-PCR and the antigen test. These are the tests for which we have developed. It has a high sensitivity and low specificity. There is a difference of around 2 to 3% in the specificity in comparison to RT-PCR. Because this validation is compared versus RT-PCR only. RT-PCR is the gold standard declared by WHO. So India also follows the same guidelines. So there are different advantages. Means during input also, if you are taking the swabs for the RT-PCR test, there is a chance that your input may be not correctly collected by the person. In chest X-ray, that is not the case. तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं in terms of cost, time, clinical setting, manpower. मतलब आप किसी को दे दीजिए वो बटन से वो कैलकुलेट. Usefulness and utility of the software, this is the important part. बाकी तो ठीक है, प्राइमरी टूल की तरह कर सकते हैं, RT-PCR के कंपैरिजन में वैलिडेशन हुआ था. This is the guidelines of the constitution or the constitution, क्या बोलते हैं उसको, जो पुलिस जेल भेजती है, जो कोर्ट में रूल चलता है, आईपीसी के जो रूल्स हैं, एडिट कर लेना है इसको. आईपीसी में जो रूल्स हैं कि कोई निर्दोष आदमी को चोर नहीं ठहराया जा सकता है. सेम फिलॉसफी मेडिकल साइड में भी हम लोगों को दी गई थी जब हम लोग वैलिडेशन कर रहे हैं. अब चूंकि कोई भी हम एआई टूल जो है 100% एफिशिएंट नहीं है, दे आर नॉट एफिशिएंट. I am claiming that my software is 96.8%. It is the sensitivity is 96.8% and the specificity is 97.32% versus RT-PCR. So there is a difference of around 3.2% and 1.8% with the RT-PCR. So there is a possibility, great possibility, that if a person is normal and it is declared as COVID or some kind of disease, so what will happen? They will start taking the medicines, and there is a great possibility that वो डिप्रेशन में जाएंगे. अब कोविड हो गया है, जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लेंगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. So we were clearly instructed to frame a guideline that if there is any kind of false positive case, means false positive means a person is wrongly declared as positive or falsely declared as positive. He is a normal person and false. It's and vice versa is the false negative. A person is having some kind of disease, but it is falsely declared as negative. So what we said
to them is, if any normal person is identified as COVID positive, then he should be suggested to avoid meetings, social gatherings, home quarantine until the RT-PCR confirms the case as per WHO recommendations. He must be not sent to any place where there is chance of getting infected. This will allow to reduce the rate of transmission of disease. ये हमने ECG का एक डिवाइस फैब्रिकेट किया था काफी साल पहले। तो अभी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था रास्पबेरी पाई से, this is actually a complete microcontroller which is commercially available. आप लोग भी खरीद सकते हैं मुझे लगा। उस पे बनाया हुआ फैब्रिकेटेड नहीं है ये हमारा, मैंने सिर्फ उसमें कोड लिखा है। So this is developed using the commercially available platform. We are in a process to fabricate it and make it more customized. Its design is complete. Only we have to go for actually money is required for getting the fabrication, and fabrication is not done, cannot be done in our college. It has to be done in some kind of companies. So these are the patent files. They are under examination. The response has been filed. Conclusion is the pandemic situation. The software is highly predictive in COVID-19 and non-COVID-19 disease. As per the WHO guidelines, it can be utilized as an alternative screening tool, and future scopes are you can increase the number of chest findings depending on the type of data which you are getting. Thank you. So we can start the practical part of it. Image download कर लिया है, code. Just open your pie chart and start loading the image and then start getting it filtered. मैंने 10-12 एक्सपेरिमेंट लिखा है, आप उसको प्रैक्टिस करें। मैं खोल रहा This is a mean filter, median filter, बहुत सारे हैं। आप जो चेस्ट के जो सेगमेंटेशन पार्ट देख रहे थे उसका 5 लाइन का मैं कोड लिखा हूँ कि आप लोग उसको समझ लीजिए। मैं एक कोड समझा देता हूँ आपको हो क्या रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन इज ऑल अबाउट द लाइब्रेरी। जिसमें आप फंक्शन ऐसा नहीं बना नहीं सकते, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इन कोडिंग इज डन इन इटसेल्फ, वो लाइब्रेरी में पहले से है। So we have studied the different processes in image processing. Now you should know that which library is the most important in image processing. That is written as CV2. So you have to import this library. There may be a possibility that it is not being installed. दो चीजें हो सकती है, जब आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है लाइब्रेरी इज नॉट इंस्टॉल्ड इन इट, सो यू हैव टू इंस्टॉल इट, एंड इफ इट इज प्री इंस्टॉल्ड देन यू हैव इन द कोड यू हैव टू राइट CV2. दिस CV2 represents the open CV library of Python. Open CV, computer vision. Open CV, can be written as import CV2. Second is NumPy. It is used for the different mathematical operations, and then after using this A, you are going to read your image. तो पहले image तक read करा लीजिए, मतलब पहला 3 लाइन 4 लाइन। हाँ, you have to type it. आप लोग अगर बुक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक पाइथन की बुक भी है, बहुत इजी है, वो भी आप ले लीजिए। आपको जैसे पढ़ना है आपको हम पढ़ा दीजिए। बिकॉज प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। गूगल पर जो कंसल्ट ये वैल्यू नहीं
ये सब तक मैं एक बार लोगों को एक्सप्लेन करूँ करना क्या है। 10-12 प्रोग्राम है हमारे पास। See, we have the different programs for filtering, contrast enhancement, histogram equalizer, median filter, image enhancement, in which we are going to enhance the different features of the image. सब छोटा छोटा प्रोग्राम है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ। 2 लाइन का कमांड है, उसमें लिखिए इमेज इंस्टॉल कीजिए और डिस्प्ले कीजिए। That's it. Then histogram equalizer, contrast enhancement in images, sigmoid correction, local contrast enhancement in images, ideal low pass filter, Butterworth low pass filter, Gaussian O2 algorithm, which I was talking about the image segmentation part. सब 2-5 लाइन का है, बहुत बड़ा नहीं है। बस ये 5 लाइन में आपको इमेज अपलोड करना है, 2 लाइन लिखना है और आउटपुट चेक करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल इमेज एंड द डिस्प्ले। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ, वो कर दे रहे हैं। Adaptive thresholding in the case of image segmentation, O2 thresholding and watershed algorithm. Contour segmentation is also there. कौन सा है? कॉपी कर फोटो लेने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको भेज देंगे। कल भी भेज दिए तो मैं लास्ट में भेज देंगे। हम आपको पूरी बुक ही भेज देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछिए। वी आर हियर। वो जैसे आपको व्हाट्सएप पे मिल गया था, शाम तक ये भी व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा था। बस पढ़ नहीं सकते हम आपके बदले। आप पढ़िए और मैं कोई सेटिंग रिपोर्ट उसमें जहाँ वही लाइन है cv.ind और c.in तो वो जो फाइल का नाम होगा वो डाउनलोड Never ever write the full code at the same instant. Go just line by line. एक एक करके आइए। लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद इमेज को लोड कीजिए। इंपोर्ट वाले 3 लाइन है ना वो लिख लीजिए नहीं मैम, वो लाइब्रेरी वो आपको जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि नीचे जो आपको काम करेंगे उसका सपोर्ट जो है उस लाइब्रेरी में, तो वो 3 लाइन जो है वो लाइब्रेरी में। उसके बाद एक एक करके लाइन लिखना शुरू कीजिए कि क्या हो रहा है, सब आपको समझ में आएगा। जिस फोल्डर में आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे वहां पे फाइनली आउटपुट भी सेव हो जाएगा इस फाइल में जो लास्ट में लिखा होगा। सेकंड पार्ट है जहाँ पे भी हैशटैग डिफरेंस पार्टिशन मतलब कमेंट है This is only to make you understand that which line is doing what.
जैसे एक रैंक हुआ, दूसरा रैंक हुआ, इमेज तो बोला था ना, प्रेजेंटेशन से पहले ही डाउनलोड कर लेंगे। वही तो एक किलो चेक ठीक है, इधर ही हम कैसे दिक्कत नहीं, वो देखना पड़ेगा सेटिंग। इसलिए दे देता है ना, ऑनलाइन कंप्यूटर नहीं है जो कोड चला रहा है वो ऑनलाइन ऑफलाइन उसको वेट में लिखा रहता है कनेक्ट हो रहा है। अरे यार ये किसका ये आपका फोन उठा रहा है। फोल्डर बना दीजिए। हाँ वो वहाँ ऑनलाइन ही चला रहा ध्यान रखिए, पास रखना चाहिए, सेम फोल्डर में ये रहना चाहिए, इन्वर्जन नहीं रहना। Just make sure that this is your file c.png. So either you have to change your file name to C, or in the program itself to change the name of the file. You have both the options. Secondly, you have to also check the file type. If your file name is correct and file type is JPEG, then it will not be read by your program. Not JPEG. The PNG or JPEG all there. ये नहीं कर सकते ना, ये नहीं कर सकते। आप समझिए कि आपके पास 4 डायमेंशन है, समझ रहे हैं? और आप सेलेक्ट किए हैं क्या, सिर्फ एक वेरिएबल। हमें का मतलब कि हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी तो हम यहाँ तक हमने जितना भी फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट किया था। तो कर सकते हैं किया सर, यहाँ पे आ रहा था, लेकिन मैं उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा था, कर लिया तो आप नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। कब बेटर से रेगुलर में आपको बेटर दिखेगा। याद कीजिए एक्सट्रैक्ट कहाँ क्या हुआ, और जैसे देखो कि क्या है आपको कैसे पता चलेगा, प्रॉब्लम ये है ना, हमारा क्या चल रहा है ये रिकॉर्डिंग बताएगा। यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे
आपके पास थ्री पिक्सल वैल्यू होती है। थ्री डायमेंशनल जो है, और उसके बाद जो है इसमें जो है कि जब स्कोर करा तो 183 प्लस 76 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। हाँ तो ये 186 वाला है, ये 276 वाला है, और ये 103 है। आपको यही चीज में कह रहा था कि ये चीज जब हम समझ जाएंगे ना कि आ क्या रहा है, तो कुछ नहीं, खाली नंबर है। ये जब भी देगा सर हमें पिक्सल देगा। हाँ, ऑब्वियसली ये पिक्चर्स को बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। जैसे वोल्टेज सिग्नल है साइनोसॉइडल, तो आप एक्सेस टाइम और वाई एक्सेस वोल्टेज या करंट इसका का प्लॉट है, इसका तो मीनिंग सिग्निफिकेंस है। आपने दो एक्सिस की वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, उसको ये प्लॉट कर दिया, इसने तो पिक्सल नहीं प्लॉट किया ना। हाँ, और कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू है तो मैक्सिमम यहाँ तक दे हुई है। आप जब वेरीफाई करेंगे अपने ओरिजिनल डेटा से भी, तो मैक्सिमम वैल्यू पता करेंगे या तो आप सेलेक्ट किए और मैक्सिमम वैल्यू पूरे रो में पहुंचता है। सर हम लोग जैसे मैं जो मेरा पहले करके इमेज को एक साथ हिस्टोग्राम के प्लॉट करके उसकी वैल्यूज को एनालाइज वैसे ही बस ये है कि इसका वैल्यू है तो समझ। बस वो एक बार समझ में आ जाए, जैसे अभी सर ये हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या है। इसको गोली मत दीजिए, आपको एक थंब रूल याद रखिए, एक एक लाइन करके खोलिए और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसके बारे में सोचना है बस। जैसे इसको हमने एक बार रन किया तो उसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल इमेज टू में स्टोर है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आप इमेज को खोल के देखिए कि उसमें क्या है, तब आपको समझ में आएगा। दोनों इमेज सेम आ रहा है। तो मीडियन फिल्टर इज नॉट वर्किंग गुड, ये मीन फिल्टर से दूसरे फिल्टर पे चलेगा। पहले ये तो कर लीजिए, मेरा भी आ रहा है। आप दूसरा इमेज डाल के देखिए, 4-5 इमेज डाउनलोड कर लीजिए ना। सर ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोड जो है वो आपका मर्जी हटा देगा। इट इज अ मेथड you go implement it. It maybe it will not work on X-ray, it will work on plant or leaf release detection or any other data. But it is one of the methods used for data filtration. Data कुछ भी ले लो, आपको मन है plant leaf लेना है, plant leaf लेना है, just X-ray लेना है, just X-ray ले लो। सर ये जो फोर्थ वाला डन जो cbq.cbc फॉर्मूला में डालने से ये इधर आ रहा है, इसमें कुछ पता नहीं है कि क्या लिखना है इसमें। बस सब लाइन एक बार में फोकस कर देखिए, ये तो कुछ समझ फिर कहानी में जाता है। रीड करना है तो फाइल नेम लिखिएगा ना, फाइल नेम आप लिखेंगे, फाइल नेम आप लिखिएगा। हाँ, फाइल नेम भी वही रहना चाहिए, लेकिन शायद से नहीं। तो नहीं हाँ सर, चेंज हो रहा है, चेंज होगा, एकदम लगता है। इस प्लेटफॉर्म पे तो
एरर होगा टाइप करना फिर हो गया ना ये हो जाए तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में करूँ यस सर मैडम अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये सब चला के दो लाइन का है सब नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लाइन लिखना है वो जो है मतलब आप लोग जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो आपको क्या पता है कोड में क्या लिखा था उसके लिए जो है हमने हैश करके कमेंट कर दिया जो कोड है उसके ऊपर जो हैश वाला सिग्नल है दैट इज अ स्टेटमेंट वो ऑब्जेक्टिव है उसका उसके नीचे ऊपर कोड लिखा है जैसे ये क्या कर रहा है ये सीवी टू लाइब्रेरी है इमेज को ओपन कर रहा है ये उसका कमेंट को कमेंट बोलते हैं और उसको कोड अगला जो कोड है वो देखिए हैश के नीचे कन्वर्टिंग द इमेज टू ग्रेस वो आपको a इज इक्वल टू और नेक्स्ट है यहाँ पे k इज इक्वल टू हाँ वो तो कमेंट चलिए अब समझ गए बता सबको होगा ना अपने मन में है तो मैडम के भी है तो मतलब सबके है just listen me for a couple of seconds this hash whatever written after hash is a comment it is a process and how it is implemented is written just below the comment like this line is responsible for opening the image using CV2 library means you can see here that CV2 library is used open CV library IM read means it will IM means image read it will read the image whatever path or file name you have given. Secondly, converting the image to grayscale. So we are trying to convert our image to grayscale level. So all the statements that are after hash are comments, they are not the codes. So you don't need to write that. It is just for your understanding purpose what the codes are doing. What are the objective of the codes? Like this statement. This is CV2.im right? So whatever process you have done, it will write on the where it will write in the image itself. So there will be another file that will be saved using mean underscore output automatic. जहां ये लाइन खत्म करके if you will press enter, there will be a file which will be automatically saved using in the same folder using this file name. Change कर सकते हैं. You can change this file name also. The name of the file which you have downloaded must be here. So either you change the file name or you write the file name here. JPG extension format drop down. वो कन्वोल्यूशन करने के लिए 5x5 का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कन्वोल्यूशन कर रहे हैं हाँ 8 बिट में करने के लिए नॉर्मलाइज कर रहे हैं उसको 25 जब आप उसका वैल्यू देखिएगा ना इसीलिए पहचान में सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका आप वैल्यू देखिएगा इसको जो वेरिएबल आएगा ना उसकी वैल्यू देखिएगा फिर डिवाइड कर देना इन द वैल्यू को नॉर्मलाइज कर देना
ये कोड कहाँ से The library don't need it. Actually वेरिएबल नहीं दिखता है तो फिर तो डिस्टेंस होता है जब मान गया तो धन से पड़े हुए हैं ना तो वही देख के लोग बता सकते हैं कि डेवलप मॉडल है लेकिन फिर थोड़े से कीजिए लाइन बाय लाइन So can we go for the next board? ये बोर्ड कहाँ है? ये बोर्ड कहाँ से है? सेव करना नहीं है ये सेव कर दिया अब किया कहाँ है जहाँ कोड होगा ये आगे ये आउटपुट है आपका देखो सबसे बड़ी यहाँ 10 यहाँ से दे दो कभी भी कोडिंग में कोई भी गैप मत रखिएगा फाइल नेम वगैरह वो ऑनलाइन भी चला रहे हैं नहीं करने का सवाल मानी हमारे देखिए पहला
आपको फोल्डर जुपिटर मेरा ये से काम किया हुआ है, स्पाइडर पे काम किया हुआ है। ये लोगों ने बेसिकली जीव में उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उससे 5.5 का जो है डेटा मैट्रिक्स से कॉन्वर्जेंस ऐसे करेंगे अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको दिख रहा है इसलिए इसीलिए हम क्या करेंगे क्या वैल्यू शुरू हो रहा है तो उससे पता चल जाएगा पहले जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही है डिवाइड तो स्पाइडर में थोड़ा ज्यादा अच्छा ये एक्चुअली जनरली कलर इमेज प्रोसेसिंग हमको प्रैक्टिस करना है आपने पहले से एक्सरे इमेज ले ली आप कलर इमेज ले लीजिए और फिर चला के देखिए कोड चल गया अब जो है ये क्या कर रहा था कि ये जो है नाम से फाइल को सेव होना था जो भी ऑपरेशन आपने इसमें ओपन किया यहाँ देखिए इसी नाम से फाइल जो है अब फाइल नेम चेंज करके दूसरा इमेज डालिए और देखिए क्या हो जाएगा। बाकी लोग करना था ना दूसरे मीडियम ट्रीट ये सब कलर का सी सबको कराना ऐसे के बैठे हैं क्वालिटी का करना पड़ेगा तो ये बात नहीं ये एक्चुअली कलर इमेज प्रोसेसिंग के लिए आप लोग इमेज उठाए हैं वो पहले से क्रिएट हो वो तो उसको करेगा कलर वाले को भी सब हाँ वो पूरा ग्रे स्केल में ले आएगा वो क्योंकि कई बार आप देखेंगे ना कि कुछ फीचर्स जो है ग्रे स्केल में ज्यादा प्रोबेबल दिखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में जैसे क्लाइंट डिलीट वाले में कलर आपको दिखा रहा है सेगमेंटेशन में काफी अलग चीजें हैं अच्छा उनका दूसरा कोड चल रहा है पहला चल रहा है वो तो गया इसमें क्या करना है ये ऑनलाइन है कंप्यूटर में ये इंस्टॉल्ड है फिर भी प्रॉब्लम मैडम ये आर क्यों लिखा है नहीं लिखा ना नहीं अब चलेगा देखो बात क्योंकि कलर में ये डॉट को लिखिए वो वेरिएबल है अब देखिए अब चलेगा
एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑनलाइन लाइब्रेरी इतना आगे चले नेक्स्ट प्रोग्राम पे। आप लोग थोड़ा टाइप करने में समय ज्यादा ले रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट देख लेते हैं। This is the segmentation O2 algorithm. Again 4 lines of code. 4 लाइन है, पहला कुछ लिखा होगा आपने, कुछ इमेज अपलोड करा है। ऊपर में जो चीज नहीं है उसको लेना होगा, जैसे CV2 आप ले चुके हैं और लंबाई ले चुके हैं, तो इन दोनों की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट में वैसे ही जो आपका इतने का रिजल्ट है वो यहाँ पे सेव कर देगा ये। आप ये भी करें, मैंने तो किताब को उठाया उसी पे सारा बैठ के होने लगा ऐसे कैसे जाएगा। दिक्कत इससे होगा कि यदि आपका डेटा देगा ये ऑपरेशन डेटा पे चलना है, नाम तो आप ये भी चलता है इस फाइल आपके नाम से लगाएगा, इस पर ऑपरेशन नहीं होगा, इस फाइल से फाइल शेयर हो जाएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये जो मैटर से बनाएगा इसी को पूरा ऑपरेशन चलना है। चलना क्या है चलना इसका अपना नहीं चलना।
पास जाने की कोई जरूरत मैंने कुछ टाइप करना नहीं है जो नाम से वो दूसरा वाला ट्रीटमेंट क्या था पिछले का मैडम आप लोगों का चल गया था ना ग्रुप में सिलेक्ट किया मुझे इमेज जो है ना इमेज को ग्रेड किया जाता है तो इमेज आपका पहले से ग्रेड किया तो कलर में बनाए ज़्यादा लाइट भी कुछ नहीं है तो आपने वही ग्रेड किया हम तो मेथड का एग्जांपल होगा इमेज जो वाला आपको यहाँ पे आपको दूसरा इमेज डाल दीजिए वो उससे रिलेटेड तीसरा दे दीजिए तीसरा दे देगा यही नाम है दिया सीपी नाम लिख दिया आगे बढ़ेगा
उसके बाद कलर है ये जो नीचे आप लिख रहे हैं कोड इसमें मेरा कोड ये कॉमा है डॉट है कॉमा का लास्ट में डॉट मेरे कलर मतलब बीजी देखिए ऑफ करना हो यहाँ जैसे आप स्लैश दीजिएगा गाँव से बाहर फोल्डर कॉमा नहीं दीजिए फोल्डर दीजिए बताएगा इसीलिए सेव नहीं होगा हम देखिए इसी नाम पे आप सेव नहीं करते हैं कैपिटल ये अक्षर ये इनपुट है यहाँ डिफाइन करवाना होता है अगर आपका पहचाना ऑप्शन कहीं रहा आपकी सही है ना इसे डालना आपको पहचानने में इजी ज्यादा होगा ना ऊपर बोला है ना कुछ ठीक है हमारी ब्रैकेट्स लगाना कोई ऐसा नहीं आईटी में वीडियो पढ़ा ड्राइविंग सही रहेगा अच्छा
स्टाइल में एरर दे रहा है आपका भी। हाँ, ये स्टाइल में एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि बहुत स्टाइल करता नहीं है। जब तक वैल्यू नहीं है। वो हटा के सर वो पर्टिकुलर कमांड नहीं है। ठीक है, वो जो हम डेटा एक्चुअली चला रहे थे ना, उसको हम एरे में कन्वर्ट किए। इसलिए मेरा ओरिजिनल इमेज जो है पीएनजी में है, हो सकता है जेपीजी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये अभी जरूरी नहीं। अभी हम आपको दिखा रहे थे वो वन से टैप पे कमी आया है। इसको ऐसे करके दिस है जस्ट नीचे कैसे रन करेगा ना, ये वाला है, ये वाला, ये वाला उसको चला चुका
पीछे वाला गाना ये दूसरा शीट आपको डायबिटीज मैं डॉक्टर में डायबिटीज कराऊंगा मेरा ध्यान से मैडम यहाँ फ्लैश नहीं दे सकते फोटो नहीं लगी वो आए व्हाट्सएप पे आप लोग जिसमें है उसको लिखना ये दिया है ये ना वो तो इसका हेलमेट का एक पहले वाला अप्लाई करने के लिए किसी का चला है? सही से अभी रिजल्ट आया उसका नहीं सीआई फाइल नॉट हियर जो आएगा उसी से पकड़ाएगा सीआई फाइल अपने इंक्लूड ही नहीं कराया लेकिन दूसरा कोड देखिए नॉर्मल रिपोर्ट प्रीवियस वाला रन कर रहा है ये वाला किसी को कोई डाउट आज थोड़ा अच्छा समझ में ज्यादा बताया कॉन्सेप्ट एक ही है आप उसको जब हम आपको कह रहे थे जन्माष्टमी आप देखो आपको सी लैंग्वेज आता है सी में भी चलेगा पहले आपको यही नहीं पता होगा कि मेथड क्या है तो भाषा सीखने भी क्या पहले फोकस ये था मेथड बताना मेथड ज्यादा से कल बता दिया मैटलैब भी प्रैक्टिस कर लीजिए वही चीज इसका भी मैं आपको दे दूंगा आराम से बैठ के करते इसका तो मेल ड्रॉप कर लीजिएगा नंबर ले लीजिएगा ठीक है हम चलते हैं सर एक बार वापस स्कूल पे फोटो ले लेते हैं ये लोग नहीं रहेंगे